Hello friends, welcome back to our YouTube channel English Literature Gyan. In today's video, we will talk about some important MCQs related to English literature. So let's start the video. First is who is known as the founder of Bloomsbury Group, and the options are Leonard Woolf, Clive Bell, Virginia Woolf and E.M. Foster, and the correct answer is Virginia Woolf. Friends, the Bloomsbury Group included E.M. Foster, Lytton Strachey, Clive Bell, Roger Fry, Vanessa Bell, Duncan Grant, John Maynard Keynes, Leonard Woolf, and Virginia Woolf. Next is under which pseudonym did James Joyce three stories, The Sisters, Evelyn, and After the Race appear? And the options are Stephen Dedalus, James Dedalus, Stephen Joyce, and Augustine Aloysius. And the correct answer is option A, Stephen Dedalus. Next question is, for art's sake alone, I would not face the toll of writing a single sentence. The statement was expressed by William Pater, James Joyce, George Bernard Shaw, or I.A. Richard. And the correct answer is option C, George Bernard Shaw. Next is, the curfew tolls the knell of parting day is the opening line of the poem The Progress of Poesy, Hymn to Adversity, on the death of Mr. Richard West, or Elegy written in a country churchyard. And the correct answer is option D, Elegy written in a country churchyard. Friends, it was written by Thomas Gray and published in 1751. Main theme of the poem is inevitability of death. Next is, who wrote the essay London Solitude? फ्रेंड्स, लंदन सॉलिट्यूड जो ऐसे है वो किसके द्वारा लिखा गया है? एंड द ऑप्शंस आर फ्रांसिस बेकन, विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब और रिचर्ड स्टील. एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विलियम हैजलिट. फ्रेंड्स, it was published in 1830. Laodamia is a narrative poem written by William Wordsworth, A.L. Tennyson, P.B. Shelley, or John Keats. And the correct answer will be option A, William Wordsworth. Friends, it deals with the classical story of Protesilaus and it was published in 1815. Next is Dove Cottage, a house on the edge of Grasmere in the Lake District of England, is best known as John Keats' home, A.L. Tennyson's home, P.B. Shelley's home, or William Wordsworth's home. And the correct answer is, it is known as William Wordsworth's home. Friends, William Wordsworth and his sister Dorothy lived there from 1799 to 1808. William Wordsworth, S.T. Coleridge, and Robert Southey are known as the Lake Poets. Next is suspension of disbelief or willing suspension of disbelief is a term coined by John Keats, A.L. Tennyson, S.T. Coleridge, or T.S. Eliot. And the correct answer is option C, S.T. Coleridge. What is suspension of disbelief? Suspension of disbelief temporarily allow oneself to believe something that is not true, especially in order to enjoy a work of fiction. जब हम temporarily अपने बिलीफ को सस्पेंड कर देते हैं और कुछ ऐसे तथ्यों, फैक्ट या फिर एक्शंस पर विश्वास करते हैं जो कि रियल लाइफ में संभव नहीं है,
ऐसे सस्पेंशन को हम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं तो मूवी में जब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को उसमें उड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि रियल लाइफ में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन हम उस मूवी को एंजॉय करने के लिए कुछ समय के लिए हम इस डिसबिलीफ को सस्पेंड कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, और हम उस मूवी को एंजॉय करते हैं। इट वॉज क्वाइंड इन हिज वर्क biographical sketches of my literary life and opinions. In short, it is known as Biographia Literaria that was published in 1817. Next is Seven Types of Ambiguity. A work of literary criticism is written by William Empson, I.A. Richard, Ralph Waldo Emerson, or Julia Kristeva. And the correct answer is option A, William Empson. Seven Types of Ambiguity was published in 1930. Next is He that dies pays all debts. I defy thee, mercy upon us. Who speaks these lines in the play Tempest? And the options are Miranda, Stefano, Caliban, and Trinculo. Friends, the correct answer is option B, Stefano. Stefano is a drunk butler of King Alonso. Who among the following gave a happy ending to the play King Lear? And the options are Nahum Tate, William Shakespeare, Ernest Hemingway, and William Congreve. And the correct answer is option A, Nahum Tate. Nahum Tate gave a happy ending to the play King Lear. Friends, in this play, King Lear restored to his throne and Edgar and Cordelia married. विलियम शेक्सपियर जी का जो प्ले है किंग लियर, उसमें जो उनकी सबसे छोटी डॉटर होती है कॉर्डेलिया, वो अपने फादर किंग लियर को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देती हैं, एंड किंग लियर भी जो है उनके दुख में लास्ट में उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन नाहम टेट ने किंग लियर जो प्ले है इसको हैप्पी एंडिंग दी है, और उसमें दिखाया गया है कि किंग लियर अपने जो उसका थ्रोन होता है उसको रिस्टोर कर लेता है, एंड इन द एंड ऑफ द प्ले एडगर एंड कॉर्डेलिया की शादी हो जाती है। नेक्स्ट इज स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज 4 iambic pentameters, 6 iambic pentameters, 10 iambic pentameters, or 8 iambic pentameters. And the correct answer is option D, 8 iambic pentameters. What is Spenserian stanza? Spenserian stanza is a fixed verse form invented by Edmund Spenser for his epic poem The Faerie Queene. Each Spenserian stanza contains 9 lines in total, 8 lines in iambic pentameter followed by a single line in iambic hexameter. The last line in iambic hexameter is called Alexandrine. Friends, स्पेंसेरियन स्टेंजाज में आपकी 9 लाइन्स होती हैं। जो पहली 8 लाइन्स होती हैं वो आपकी आयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी होती हैं, एंड जो 9th लाइन होती है वो आपकी आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी होती है। और ये जो 9th लाइन होती है जो कि आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी होती है फ्रेंड्स, इसको अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसेरियन स्टेंजा इज ए बी ए बी बी सी बी सी सी। ये स्पेंसेरियन स्टेंजाज की जो है आपकी राइम स्कीम होती है। नेक्स्ट इज इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोसेशन ऑफ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। द कोटेड लाइन्स आर टेकन फ्रॉम सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थैंगर अबे, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, एंड एमा।
And the correct answer is option C, Pride and Prejudice. Friends, it was written by Jane Austen and published in 1813. It was all about today's video. Thanks for visiting our YouTube channel. Please like, share and do subscribe. Keep working hard. Thank you.